So most of the time people ask me the roles and responsibility of a sales development representative and why at first place company hire the sales development reps. So I would like to cover the roles and responsibilities of an SDR and what value they bring on the table for the company. Okay. So before that, my name is Hemant. I am the CEO and founder of eConnect IDs and SigTex. Let's begin. So like I mentioned, most of the people, they ask, why does a company hire sales development representative? So the answer is very simple. They hire because they want to create a predictable revenue without burning senior sales team time. Now to create a predictable revenue, you need someone to get enough lead on the top of the funnel so that it will be given to the account executive or the senior sales manager who can then go ahead and close the deal, right? How does the sales development representative, I will maybe address sales development representative as SDR to save time. So how does they get all these leads for the account executive or senior sales people? So they do it by doing a lot of cold calling activities, emails and follow-ups. These days they also do a lot of maybe LinkedIn messaging, and then they give it to the senior sales managers or the account executives who are responsible to do the demos and negotiations. Now, in a very simple way, I have created a funnel which shows the responsibilities of the SDR and till where it is actually required, and after that it has been given to the account executive as seen in the funnel. So leads is nothing but the data provided to the sales team so that they reach out to all these leads and qualify the lead for the account executive. Now how do they do that? Now once they get the leads, the SDR will first try to understand the ICPs from these leads. They will try to bifurcate the data for cold reach outs. Now, once the bifurcation is done, they will go ahead and talk to all the ICPs in the database. Once they get the connect and once the prospect shows interest, then the SDR will qualify the lead by asking them the requirement and if the budget has been approved already. Once the information has been given to the SDR, then SDR does the merger with the account executive. Now the account executive and the SDR will sit together and understand whether it is worth taking this lead ahead, as in whether it is worth to do the demo with the prospect. So you see opportunities, right? So once it is there in the opportunity funnel, opportunities tab, the job of an SDR is done. But it is not as simple as it seems. An SDR has to go with a lot of grilling session. Doing 100, 150 plus calls every single day is not easy. And out of 100, 150 calls, not all the calls will be a positive call. They might get rejections, they might get, some maybe abusing on the calls and stuff like that. So they have to day in, day out, come do maybe 100, 150 dials, try to get the positive out of it and then give it to the account executive. So this is the daily to do of an SDR, right? अब मुझे बहुत बार लोग पूछते हैं कि अगर एक कंपनी में SDR नहीं होगा तो कंपनी चलेगी क्या? नहीं भाई, ऐसा नहीं है, कंपनी फिर भी चलेगी. There are so many companies who doesn't have SDR at all, but to some extent I think they will be able to grow, but कहीं ना कहीं वो उस तरीके से scale नहीं कर पाएंगे. I will tell you why. If there is a company without an SDR, they won't be getting a precise number of meetings every month, right? तो कोई भी एक कंपनी बोलेगा कि यार मैं गूगल एड्स करता हूँ, मैं लिंक्डइन एड्स करता हूँ, मैं अपवर्क से बिडिंग करके लेके आता हूँ, बट उनके पास में एक फिक्स्ड नंबर नहीं है मीटिंग्स के, ठीक है? Now because they do not have a fixed number of meetings on a monthly basis,
revenue is inconsistent. Now when I say revenue is inconsistent is because जब उनके पास में मीटिंग ही फिक्स नहीं है, उनको पता नहीं है कि कितने मंथ में कितने मीटिंग्स उनके आने वाले हैं, how would they keep a track of the revenue they will be generating on a monthly basis, right? But with an SDR, you get a daily outreach target. You give a daily outreach target to the SDR. Maybe you can give them 2, 5, 10 based on the service and the product that you're selling, right? Or because you're giving them the daily target outreach and they are able to get you maybe whatever the target that you have given, 2, 5 or 10 per day. So for example, if 50 is the target on a monthly basis, so one SDR giving you 50 meetings, उसमें से अगर मैं 25 को भी निकाल दूं, 50% को मैं निकाल दूं, you still have 25 positive meetings in your head, and then you do your analysis कि ये 25 पे से मेरे को कितने क्लोजर्स मिल सकते हैं, right? And then the closure, समझ लो मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को 5 closure out of 25 मिलने वाले, 5 closure into the pricing that you are charging to the customer. It's a simple maths, right? 5 into the pricing that you're charging to the customer. ये आपका on an average revenue generation है per month का. This is what is done by an SDR. Without an SDR, it is not possible at all. Okay. Now, here I want to talk to SDRs what they should do before going on any call और जब भी वो कुछ email करते हैं. Prospect research. Prospect research is very important. अभी क्या मैंने बहुत बार देखा है कि यार SDRs ना they run away from doing research before going on a call. They randomly call the prospect and follow the same script they have been doing for other customers. Not customers, but for other prospects. The only thing that will help you to stand out of the crowd or maybe get that connect with the prospect or maybe the prospect will remember your name is only if you do a good deep research before going on a call. Imagine you talking about something they are interested about, right? And then the connect is there. Even if they do not have the requirement on an immediate basis, definitely they will circle back to you whenever the requirement arises. That is for sure. Who the company is, right? This is also very important. Who the company is. ऐसा नहीं है कि आप BFSI को रीच आउट कर रहे हो और आप चिपका रहे हो मैन्युफैक्चरिंग का स्क्रिप्ट, आप चिपका रहे हो रिटेल का स्क्रिप्ट. दैट वोंट वर्क. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस कंपनी इज इनटू, है ना? उनके चैलेंजेस, उनके पेन पॉइंट्स, उनके अचीवमेंट्स, ये सब जानने की कोशिश करो बिफोर यू ड्राफ्ट एन ईमेल और मे बी बिफोर यू क्रिएट दी कॉलिंग स्क्रिप्ट. नाउ मोस्ट कॉमन SDR ऑब्जेक्शन. अभी बहुत बार क्या होता है ना, मेरे को बहुत बार यार लोग बोलते हैं कि यार सेल्स में तो बहुत ऑब्जेक्शंस आते हैं, नॉट इंटरेस्टेड मिलते हैं. हाउ डू वी हैंडल दैट? दैट इज अ वे टू हैंडल इट. सी, आपको थाली में लाके कोई लीड आके देगा नहीं, राइट? यू हैव टू मे बी इट्स लाइक गेटिंग द नीडल, सर्चिंग द नीडल इन द ग्रास. ठीक है. नाउ हाउ डू यू सर्च दैट नीडल इन द ग्रास? बाय like जैसा मैंने बताया, like doing prospecting, connecting with the prospect, building that connection, है ना? और तो उसी में एक सिनेरियो आता है जहां पर prospect tells you कि I am not interested for now. यहां पर आपका अप्रोच ये होना चाहिए, I completely understand that you do not have the requirement right now. How about I send you an email? Okay, hear me out. How about I send you an email and maybe follow up with you maybe in a quarter's time to understand if there is any changes in the company and if you require our service. That is the number one approach. आप उनके इनबॉक्स में भी चले जा रहे हो, ठीक है, और आपके पास में वो कहीं ना कहीं वो एक ओपन विंडो है कि आप वापस से उनको 3 महीने बाद में रीच आउट कर सकते हो. Same goes with someone who says send me an email. If someone is asking you to send an email, sure John, why not? I will go ahead and send you an email. But how about I follow up with you again on Friday just to check if you have received my email, and we take it from there. Either he will say yes. If he says yes,
How about 12 p.m.? I will put this on the calendar just to avoid any confusion. It will be hardly a 5 minutes call, just a follow-up call. और अगर वो सेकेंड बोलता है नहीं, no, it's okay. I will go ahead and send you the email. Okay, whenever there is any requirement, you can simply reply back to my email. Right? Fair enough. Third is we already have a vendor. ये तो बहुत ही अच्छी बात है. अगर कोई बोलता है कि we already have a vendor in house, तो वैसे सिनेरियो में you can maybe ask them what product these guys are using currently. एक आपके पास में उनका वो इंसाइट मिल गया कि ऑलरेडी दे आर यूजिंग XYZ फॉर ERP. वो अपने कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन छुपा दी, मतलब यू हैव दी इंफॉर्मेशन हैंडी विथ यू. ठीक है. और उनको सेकेंड क्वेश्चन आप ये पूछ सकते हो कि हाउ अबाउट वी jump on a quick demo call, not to sell you upfront, but maybe you get an opportunity to compare your current product with ours. Right? यहाँ पर आप उनको बोल रहे हो कि मैं बेच नहीं रहा हूं उनको, but at least you get the opportunity to compare. और कहीं पे अगर वो your A is smart enough to maybe चमकाई him कि ये फीचर तुम्हारे लिए बहुत ही अच्छा है, शायद it can be converted into closure as well. Someone says call me later. Now this is very important. If someone is saying call me later, do not call the person the very next day and bombard him with 100 calls. If someone is saying call me later, politely acknowledge and say thank you so much, definitely I will call you back later. Can you please help me with the time so that I will call you precisely on that time, and maybe we can have a quick 2 minutes call, 2 minutes chat. Rather than if someone is saying call me tomorrow, okay I will call you tomorrow, and then you keep on calling him. इससे क्या होगा, एक पॉजिटिव लीड को भी आप एक नेगेटिव लीड में कन्वर्ट कर दोगे. राइट. नाउ मोस्ट ऑफ देम दे आल्सो आस्क मी व्हाट्स द ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फॉर एन SDR in 3 to 5 years down the line. Now let me tell you one thing. If you are consistent enough, if you are persistent enough, if you have the will of maybe helping your customers, being very transparent with them, understanding their pain points, understanding their challenges, I am telling you, the scope of an SDR is to become a sales director 5 to 10 years down the line. An SDR can become a CEO of a startup like me, because I also started my journey as an SDR in 2009. Today I am running 2 different companies. So, but you should have that zeal of learning, upgrading yourself, understanding the prospects' challenges, understanding their pain points, putting yourself into the prospect's shoes, and building that connection with the prospects. Not every call will be a sales call. Always remember that. So, be on the sales call as if you're talking to someone senior and building a roadmap for yourself, so that in the future you can again connect with the prospect. Now there are myths also about SDRs, that sales job is for freshers who do not get job elsewhere in other department. नहीं भाई, sales का job सिर्फ जो the one who carry the courage, वो उनके लिए ही है. क्योंकि डेली आके ऑफिस में आके रिजेक्शन लेना प्रोस्पेक्ट से, एंड देन टीम मीटिंग में मैनेजर का सुनना कि तुम्हारे टारगेट अचीव क्यों नहीं हुए, फिर वापस से सेम मोटिवेशन के साथ में सेकेंड डे में आना, फिर वापस से उसी मोटिवेशन से हर एक चीज करना, इट बिकम्स मोनोटोनस एट टाइम्स. बट वही आप कर रहे हो, ये एक पागल बंदा ही कर सकता है. द वन हु इज क्रेजी कैन बी इनटू सेल्स. दिस इज व्हाट आई फील. राइट. Now another myth is sales is all about selling and telling lie to customers. नहीं, अगर हम lie बोलते हैं customers को, if the SDR is lying to the customer, how does the customers get an opportunity to implement a software or any service they are looking for? It is only through the SDR. तो ये बहुत ही बड़ा myth है. सेल्स में चले गए तो करियर में ग्रोथ नहीं, ये एक अलग बीत है. अगर सेल्स में चले गए
तो मुझे ऐसा लगता है सेल्स वाले कुछ भी अगर बेच सकते हैं तो सेल्स वाले कंपनी भी चला सकते हैं, सेल्स वाले टीम भी मैनेज कर सकते हैं, बिकॉज सेल्स पीपल आर द फेस ऑफ द कंपनी. इट इज एज सिंपल एज दैट. सेल्स में सीखने जैसा कुछ नहीं है. नाउ दिस इज अनदर myth. Now let me tell you, the salesperson will talk to different people on every single day. They will be talking to sales managers, they will be talking to IT directors, they will be talking to CEOs, they will be talking to operations managers. So when they are talking to multiple personas in a single day from a different department, from a different domains, so that when they have this conversation, they are always up to date with the technology trending in the market, or maybe any business thing that is trending in the market. They are the first one to know about it. So ये एक myth है जो मैंने सुना है आज तक कि सेल्स में सीखने जैसा कुछ नहीं है. Now this is the 10 core rules for every SDR must follow. One is cold calls. Guys, there is no alternative to cold calls. No replacement. If you want to become a good SDR, if you want to become a successful SDR, cold calling is your go-to weapon. LinkedIn outreach, definitely. These days people are actually utilizing LinkedIn a lot, and I think every SDR should, every single day, 5 or 10 messages, it's not a big deal, should go ahead and do it. फॉलोअप्स, नजर हटी दुर्घटना घटी. अगर फॉलोअप्स नहीं करोगे भाई तो मतलब फिर तुम्हारा बेड़ा गर्क है. डू नॉट एक्सपेक्ट टू गेट अपॉइंटमेंट विदाउट फॉलोअप्स. इट कैन बी थ्रू योर थर्ड और फिफ्थ और 10th फॉलोअप ऑल्सो. सो फॉलोअप ही है जो आपको रिजल्ट लाके देगा. इट इज नॉट योर फर्स्ट रीच आउट, रिमेंबर दैट. CRM, yes, make sure that it is not out of sight or out of mind. Why I say this is because जब भी आप एक्सेल शीट यूज कर रहे हो तो पहले बात तो आप टेक्नोलॉजी से दूर जा रहे हो. CRM कभी भी you should have that hands-on experience in any CRM, or CRM will help you to maybe understand who are the hot leads that you have to reach out to, और किसको कौन वार्म है जिनको आपको नर्चर करना है. ठीक है, वरना क्या होगा कि अपने एक्सेल शीट में सब कुछ डाल दिया, बहुत बार ये चांसेस है कि आप अपने हॉट लीड्स को, जो अपॉर्चुनिटीज है, उसको खो दोगे. नाउ ये जो मेरा वीडियो देख रहे हैं शायद मतलब कोई MBA कर रहा होगा या कोई फ्रेशर्स है, तो उन लोगों के लिए है कि जब आप सेल्स रोल में आओगे तो आप ये चीजें, ये जो जार्गन्स है, ये बहुत ज्यादा सुनोगे. तो वन इज GTM. नाउ व्हाट इज GTM? GTM इज नथिंग बट गो टू मार्केट. व्हाट इज गो टू मार्केट? गो टू मार्केट इज, अभी जैसे मैं वी कनेक्ट चला रहा हूं, वी कनेक्ट का गो टू मार्केट क्या है? मेरे लिए गो टू मार्केट है इंडिया स्टार्टअप कंपनीज, क्योंकि स्टार्टअप कंपनीज में ज्यादा सेल्स वाले हायर नहीं करते, लोग आउटसोर्स करते हैं हमारे जैसे एजेंसीज को, और CEOs. तो ये मेरा गो टू मार्केट है. तो हर एक कंपनी का एक गो टू मार्केट स्ट्रेटेजी होता है. अपॉइंटमेंट टारगेट्स, ये डेली आपकी मीटिंग में सुनाया जाएगा आपको कि आपके अपॉइंटमेंट्स क्या है, आपके अपॉइंटमेंट टारगेट्स क्या है, अचीव हुए नहीं हुए. ICP is ideal customer profile, which is very similar to JTM, also called as target audience. Follow-ups, आपने फॉलोअप लिया, आपने फॉलोअप नहीं लिया, ये सारे डिस्कशन आपको बहुत ज्यादा सेल्स में ही सुनने मिलेगा. नो शो का मतलब है जो प्रोस्पेक्ट ने आपको मीटिंग के लिए डेट एंड टाइम दिया है, आप वो लिंक पे चले भी गए हो, बट प्रोस्पेक्ट ने आपको कुछ बताया नहीं, लेकिन वो लिंक पे भी नहीं आया है, ही इज नॉट देयर इन द मीटिंग, वो टर्न अप नहीं किया है मीटिंग पे. दैट इज कॉल्ड नो शो. और एक होता है रिस्केड्यूल. रिस्केड्यूल का मतलब है जहां पर प्रोस्पेक्ट इज इन्फॉर्मिंग यू बिफोर द मीटिंग दैट ही वोंट बी एबल टू मेक इट. मीटिंग इनवाइट सबसे ज्यादा सेल्स में ही सुनोगे. देयर इज नेगेटिव, वार्म एंड हॉट लीड्स. नेगेटिव का मतलब जहां पर सामने वाले ने बोल दिया कि डू नॉट रीच आउट टू मी एवर. वार्म लीड का मतलब वो बोल रहे हैं कि मेरे को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर दो, और अगर कुछ भी रिक्वायरमेंट रहा तो आई विल रीच आउट टू यू अगेन. दैट इज वार्म. हॉट लीड का मतलब है जहां पर उनके पास में रिक्वायरमेंट भी है एंड दे आर ऑल्सो गिविंग यू द डेट एंड टाइम. अपॉर्चुनिटीज का मतलब यह है कि डेमो भी हो गया है, आप उन्हें प्रपोजल भी सेंड कर दिया है, और आपको सिर्फ उसको फॉलोअप करके क्लोज करना है, उनके पास से पैसा लेके आना है. दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटीज. नाउ व्हाट इज बैंड क्वालिफाइड लीड्स? बैंड क्वालिफाइड लीड्स का मतलब होता है बजट.
कंपनी के पास में बजट है या नहीं है। ए से आता है अथॉरिटी, जिससे आप बात कर रहे हो ऑथराइज पर्सन है क्या नहीं। नीड, जिससे आप बात कर रहे हो उसने आपको नीड के बारे में बताया है कि रिक्वायरमेंट क्या है उनकी। टाइमलाइन, क्या उन्होंने उसके साथ में टाइमलाइन भी डिस्कस किया है कि 3 महीने में हमको इंप्लीमेंट करना है या 6 महीने में एग्जीक्यूट करना है। तो दिस इज कॉल्ड बैंड क्वालिफाइड लीड्स एंड सेल्स क्वालिफाइड लीड इज वेरी सिमिलर टू बैंड क्वालिफाइड लीड्स। Who are the decision makers? Decision makers are the board of members, CEOs, IT directors, everyone who are into top hierarchy. ठीक है। इन्फ्लुएंसर वो होते हैं जो मे बी कैन बी अ मैनेजर, कैन बी अ फाउंडिंग टीम मेंबर, जो अपने सीईओज को या जो भी बोर्ड ऑफ मेंबर्स है उनको जाके इन्फ्लुएंस कर सकते हैं कि मैंने ये डेमो लिया है, मैंने ये सर्विस को जाना है और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर सकती है अगर हम इसको इम्प्लीमेंट करें। तो डिसीजन मेकर इन्फ्लुएंसर का सुन के शायद से वो डिसीजन के पोजीशन में आ सकता है। एंड देन देयर इज Q1, Q2, Q3, Q4। ये बहुत सारे कंपनीज में जो टारगेट्स होते हैं वो टुकड़ों में बांटे जाते हैं, Q1, Q2 एंड सो ऑन। तो ये आप जब भी आप सेल्स टीम ज्वाइन करोगे तो आप लोगों को ये जो है Q1, Q2, Q3, Q4 बहुत ज्यादा सुनने मिलेगा। तो आज मैंने कवर किया सेल्स के बारे में, SDRs के बारे में मेनली, कि SDRs होते हैं क्या, उनके जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होते हैं, KRA क्या होते हैं। अगर आप लोगों को इसके अलावा कोई वीडियो देखना होगा, एज इन इफ यू वांट टू नो अबाउट द स्टार्टअप, द जर्नी ऑफ द फाउंडर, स्टार्टअप फाउंडर, और मे बी इफ यू वांट मी टू टॉक अबाउट अकाउंट एग्जीक्यूटिव रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो भी है, you can put that in the comment section, or I will be more than happy to make the video. For now, adios and thank you so much.